Hi, Marmik sir. How are you? Yeah, hi Muskan. I'm fine. So, Marmik sir, before we proceed further, can you give a little introduction about yourself? What do you do and about your company? Yeah. So I'm a practicing chartered accountant, practicing for almost more than 15 years. And at Mac and Associate, we are a partnership firm with almost 75 people team. Okay. And majorly we practice as a chartered accountant firm in traditional and non-traditional areas. Okay, great. And so, as you have been in business from 15 years now, what challenges have you faced throughout your, journey? And as a CFM, it is so important to deliver things on time to the clients. तो आप आपकी टीम को और आपके काम को आज दिन तक कैसे मैनेज करते हैं? So, Muskan, there are two main kind of challenges. One is, of course, technical, the knowledge part, and the second is operational, जहाँ पे you have to manage the team because सारा काम मैं खुद नहीं कर सकता, मेरी टॉप मैनेजमेंट सारा काम खुद नहीं कर सकती. We have to go to middle management and the lower management team. So ये तीनों लेवल पे सबको अलाइन रखना and to making sure that they understand the task and टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स टाइम कितना इसमें अंदर देना है रिपोर्टिंग देना है उसका नेसेसरी पेपर्स उसके अटैचमेंट वगैरह टाइम से हो जाए टू कोऑर्डिनेट दिस थिंग्स एंड अल्टीमेटली डिलीवरिंग टू द क्लाइंट from operational part this were the main challenges that we have been facing over a period of time. Okay. So, how have you been managing it before TaskOPad, and how you feel like that TaskOPad has changed the game for you? So what happened is because we started practice from zero, so we have grown over a period of time. So as and when our size changed, our requirements changed. So when we started, it was me and my partner. So we were doing it absolutely ourselves. हाथ से लिख दिया काम, and we were doing it. When we grew to 10, 15 people, so we changed our methodology. As we grew further, फिर हम Excel पे, Google Sheet पे, WhatsApp पे काम करने लगे. तो काम तो हो जाता था बट लेकिन सेटिस्फेक्शन एंड कॉन्फिडेंस नहीं होता था कि एक जगह पे लिस्टेड नहीं है और बाद में अगर कुछ एनालिसिस करना हो तो वी डोंट हैव दैट डेटा टू एनालाइज सो दैट्स द रीजन वी मूव टू TaskOPad at a particular point of time. But then what has happened is once my whole team is understanding the importance, they are willing to put data in the system and things are now, everything is online documented and we have information कितना बाकी है क्या स्टेज है कौन से प्रोजेक्ट का क्या स्टेज है कौन फ्री है कौन अभी ओवर ऑक्यूपाइड है तो कैपेसिटी एनालिसिस टास्क एनालिसिस वगैरह has become much easy for us now. Okay, great, great. And how your team's productivity has changed with TaskOPad. मतलब अभी क्या आप ट्रैक कर पाते हो कि कौन मतलब आपकी टीम की प्रोडक्टिविटी पे TaskOPad ने कैसे इम्पैक्ट किया है? So main चीज productivity बोलूं the miscommunications have been reduced because now it is documented कि क्या करना है. हाँ. So रोज आके सुबह आधा घंटा वेट नहीं करना है कि अभी मैनेजर कुछ अलॉट करेगा and then we will do something. It is already allocated. So whenever they come in the morning, they can immediately start. So practically सुबह चाय के बाद ही काम शुरू करेंगे ऐसा सिचुएशन कभी कभी हो जाता है वो नहीं है. When they come, they know. हाँ, if उनको ऐसे रेस्ट लेना है दैट्स अ डिफरेंट थिंग लेकिन काम दिया नहीं है इसलिए आई एम स्टार्टिंग इट लेट दैट हैज गॉन आउट ऑफ द पिक्चर एंड मिसकम्युनिकेशन हैव बीन रिड्यूस्ड सो नाउ दे आर देमसेल्फ डिसाइडिंग कि मेरे को अभी ब्रेक लेना है कि काम करना है ये कंपल्सन वाला वो ब्रेक नहीं है कि काम दिया ही नहीं है करूँ क्या. Correct, correct, correct. Great. Great, Marmik sir. And just one last question ki agar if you would like to recommend someone TaskOPad, why would you recommend it? If you can just describe your experience in 1 or 2 lines and a little bit about TaskOPad, what it would be. So of course, I would recommend any firm who has several number of employees and they want to work remotely or on desk और बड़ी टीम है तो उसको मैनेज करने के लिए यू नीड समथिंग which is giving good insights which TaskOPad does. प्रोजेक्ट वाला जो आपका फीचर है इट गिव्स यू प्रोजेक्ट एनालिसिस दैट इज अ ब्यूटीफुल थिंग क्योंकि
टास्क के अंदर भी एक प्रोजेक्ट के लिए इतने टास्क है एंड ऑल दोस थिंग्स आर कमिंग इनटू पिक्चर. And one more important thing, Muskan, in certain cases, we use a lot of SaaS software. So support team also has to be good because when my team don't understand this, it goes to your team. And when we get good support, it is also a very important task. I don't name, but हम लोग income tax वगैरह के लिए पहले कोई सॉफ्टवेयर यूज करते थे. We changed the software only because the support team was not providing proper services. So this is also one of the reason I would say why somebody should go for TaskOPad. Okay. Thank you so much, Marmik sir. It was very insightful. Thank you so much. Thank you.